Hello. Is my voice clear to everyone? Just give me a confirmation in the chat box, guys. Clear to everyone, just give me a confirmation. Okay, so today we will be doing a very special dictation, which is your editorial kind of matter. ठीक है? Again, this is a very recent incident which has occurred. So definitely it is helpful for all of your exams. आप चाहे 2025 में एग्जाम दे, 2026 में दे, 2027 में दे, कभी भी आप एग्जाम दे, बट डेफिनेटली दीज काइंड्स ऑफ मैटर्स आर समथिंग जिस पर आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी. ठीक है, नॉर्मल आपके मैटर जो मैगजीन के मैटर से उससे थोड़ा हट के मैटर्स हमारे होते हैं. सो यू विल एंजॉय टेकिंग द डिक्टेशन. थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है. देयर विल बी लॉट ऑफ वर्ड्स जिनकी आपको आउटलाइंस नहीं आती हैं. सो डोंट वरी, लाइव क्लास के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर इस पूरे मैटर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा. हेलो हेलो हेलो, इज द वॉइस क्लियर? वॉइस ब्रेक हो रही है? हो रही है. ओके, हेलो, आवाज़ आ रही है सही से? हेलो हेलो हेलो. प्लीज़ कंफर्म अबाउट द वॉइस. क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच. ऑलराइट, ठीक है, चलिए. सो आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर है इस आज के मैटर का कि किस तरह से ये है. वी हैव गाइडेंस प्रोग्राम. हमारे पास मेंटरशिप नहीं है, गाइडेंस प्रोग्राम है. और अगर आप और बार बार इसी तरह से मैसेज करेंगे सो मैं क्लास कैसे ले पाऊंगा, राइट? तो आपने एक बार मैसेज कर दिया, मैंने देख लिया उसको. ठीक है, वी हैव द गाइडेंस प्रोग्राम. सामने दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यू कैन टेक द एडमिशन. ओके, चलिए पहले तो डिक्टेशन लेते हैं. आज का ये डिक्टेशन होगा एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट. 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन दिया जाएगा. ऑफकोर्स थोड़ा 100 से कम ही होगी स्पीड, 100 के ऊपर नहीं जाएगी. सो एवरीवन ट्राई टू टेक दिस डिक्टेशन. और जो स्टूडेंट्स एग्जाम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, आज ये मैं डिक्टेशन आप लोग के एग्जाम सॉफ्टवेयर पर भी डाल दूंगा. आप लोग जाके फ्री में डेमो ले सकते हैं. और सबसे बड़ा एक एडवांटेज आपके पास में अभी ये है, आज का जो मैटर है आप लोग को सॉफ्टवेयर पर भी मिल जाएगा, new.stenoschool.com. फिलहाल वो डिक्टेशन आपको वहाँ पे मिलेंगे. एंड आप एक ही डिक्टेशन को अलग अलग स्पीड पर स्पीड एडजस्ट करके डिक्टेशन ले सकते हो. आई होप दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज. तो जैसे मैंने क्लास में आपको 100 की स्पीड पे डिक्टेशन दे दिया, आप उसको 80 कर सकते हो, 70 कर सकते हो, या तो 100 से ज़्यादा आपकी स्पीड है, 110, 120, 130, 150, 160 WPM तक आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो. Okay, so is that helpful for you guys? Just type yes in the chat box and we will start the dictation in 5 seconds. Hansika, there is no speed issue. I'll answer about this tomorrow. कल मैं आपको लाइव क्लास में आंसर करूंगा इसके बारे में. ठीक है, आप लोग का एक्चुअली आदत नहीं है उस डिक्टेशन की स्पीड पे लिखने के लिए. ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोग को. प्रॉब्लम स्पीड का नहीं है, प्रॉब्लम आप लोग का है. ठीक है, वो जो स्पीड एडजस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट स्पीड आप लोग को देता है. ठीक है, सो डोंट से कि स्पीड का प्रॉब्लम है. वो मैंने डिक्टेशन सुप्रीम कोर्ट में जो एक्चुअली वर्किंग स्टेनोग्राफर्स है, ठीक है, एवरी डे जो डिक्टेशंस ले रहे हैं, उनसे मैंने एक नहीं 3 अलग अलग सीनियर स्टेनोग्राफर से टेस्ट करवाया है उस चीज़ को. ठीक है, सो दे कैन नॉट बी रॉन्ग. एंड वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स नहीं हैं. ओके, तो ये लोग ने अगर टेस्ट किया है इस चीज़ को, तो आई विल नेवर से कि उसमें स्पीड का कोई भी इशू है. इशू है आपके प्रैक्टिस पे. धीरे धीरे आपका हाथ बैठेगा, सिंस यू आर यूज टू 90 की स्पीड पे डिक्टेशन, 80 की स्पीड पे लेने का. बट यहाँ पे क्या है कि स्पीड में फ्लक्चुएशन हल्का सा ही हो रहा है, तो आपको आदत नहीं है उस चीज़ की. ठीक है, वो स्पीड का कोई इशू नहीं. आज आप डिक्टेशन लेकर देखिए, आपको पता चलेगा. चलिए, गेट रेडी गाइस फॉर द डिक्टेशन. Steno School, general matter at 100 words per minute, 3, 2, 1, start. The Boeing 787 Dreamliner is a modern passenger airplane made by Boeing, an American company. It is known for using less fuel
being lighter than older planes and flying long distances. The plane has new technology and is almost made from strong carbon fiber materials instead of metal. Many airlines around the world use this aircraft for international flights. However, on June 12, 2025, a Boeing 787 operated by Air India crashed shortly after takeoff from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad, India. The flight numbered AI 171 was going from Ahmedabad to London. There were 230 passengers and 12 crew members on board. The plane took off in the early afternoon at 1:38 p.m. local time. Everything seemed normal at first, but within a minute of flying, the aircraft began to lose altitude. It was reported that the engines stopped working or lost power shortly after takeoff. The pilots declared an emergency, also known as May Day call, and tried to return to the airport. But the plane did not have enough height or speed to safely land again. Just a few moments later, the aircraft crashed into buildings near BJ Medical College in the Meghani Nagar area of Ahmedabad. The plane hit a hostel building and a medical facility, causing large explosions and a fire. Most people on board died in the crash, and several people on the ground also lost their lives. Only one passenger survived and he was badly injured. Rescue teams arrived quickly and worked hard to save people and put out the fire. The crash caused great sadness and shock across India and in other countries because many passengers were from different parts of the world, including UK, Portugal, and Canada. After the crash, investigators from India, Boeing, and other international aviation agencies started looking into what caused the accident. The flight data recorder and the cockpit voice recorder, which are also called black boxes, were found at the crash site. These devices are very important because they record information about the plane's systems and the voices of the pilots before the crash. Early reports showed that the engines may have lost power at the same time, which is very unusual. When both engines stop, the pilots have only a few minutes to glide and try to land the plane safely. In this case, the plane was still close to the ground and had little time to recover. Experts are now checking if the engines had a technical problem or if something went wrong with the fuel system. Some experts also mentioned that the ram air turbine, a small emergency power device that works only when the main engines fail, was activated. This suggests that the plane had a full loss of power. The pilots tried their best to control the aircraft, but the low altitude made it impossible to reach back to the airport or find a safe landing spot. The crash has raised many questions about safety procedures, aircraft maintenance, and emergency training. Boeing has said it is working closely with Indian officials to understand what happened. Air India has also promised to help in the investigation
and to support the families of those who died. The government of India is offering help to the affected families, including medical care, money, and support for funeral arrangements. Several countries have also sent condolences, and international aviation experts are helping with the investigation. People are especially concerned because the Boeing 787 Dreamliner is a modern and trusted aircraft. Before this crash, it had a very good safety record. It starts it first started flying in 2011 and has been used for many long distance routes. It has advanced systems and based is built to avoid many common airplane problems. That is why this crash is being studied very carefully. It is important to learn what went wrong so that the same thing does not happen again. Airplane crashes are rare, but they often lead to important safety changes. In past cases, crashes have helped improve pilot training, aircraft design, and emergency response. In this case, the investigation is also checking if proper maintenance was done on the engines, if the pilots followed the correct procedures, and if there were any signs of problems before the flight took off. So far, there is no evidence of terrorism or criminal activity. The focus is mainly on a possible technical failure. The loss of so many lives has affected many families, and the whole aviation industry is watching closely. It may take several weeks or even months to get the full report from investigators. Until then, many Boeing 787 planes are being checked for similar problems. Airlines and safety groups are reviewing their systems to make sure their planes are safe. Passengers are also asking questions and want to know what steps are being taken to prevent such accidents. The Boeing 787 Dreamliner is still flying in many countries, and experts believe it is generally safe. But this crash will remain a key moment in aviation history. The final report will likely lead to new rules, better safety checks, and more awareness about how to handle engine failures during takeoff. In the end, the goal of everyone involved, from engineers to pilots to safety officers, is to make air travel safer for all passengers. Although flying is still one of the safest ways to travel, every crash is a reminder that safety must always come first. Families who lost loved ones in the Ahmedabad crash are asking for truth, justice, and change. The crash site is now being cleared, and parts of the plane are being taken to labs for further study. The black box recordings are being decoded, and experts are listening carefully to what the pilots said and how the engines worked in the final moments. As more facts become clear, the aviation world hopes to learn valuable lessons from this terrible event. The Boeing 787 Dreamliner crash in Ahmedabad is a very sad and serious incident, and its effects will be felt for a long time. Full stop. All right, so very recent मैटर हैज़ बीन गिवन टू यू, एंड आई होप आप लोग को मज़ा आ गया आज का ये मैटर लिख के.
जस्ट टाइप MEG अगर आप लोग को मज़ा आ गया इन द चैट बॉक्स. MEG मतलब मज़ा आ गया, ठीक है. एंड गिव मी अ लाइक फॉर दिस मैटर बिकॉज इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. क्योंकि इसमें देखिए आप लोग, मैंने कोशिश की है कि ऐसा मैटर आप लोगों के लिए बनाए कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी ना हो और बहुत ईजी भी ना हो लिखने के लिए, ठीक है. सो इट इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड प्लस ईच एंड एवरी वर्ड जो डिफिकल्ट है इस पूरे डिक्टेशन में, उसकी आउटलाइंस भी आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, ठीक है. सो आई एम टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स ताकि आप लोगों को नॉर्मल जो केसी मैटर्स है वो तो हम करते ही हैं, उसके अलावा यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा सो दैट आप बाकी जो भीड़ है इससे आप अलग बने. देखिए इस बार वैसे भी वैकेंसीज कम आई है तो आप लोगों को शॉर्ट हैंड में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कुछ एज लेके चलना पड़ेगा. ओके, मज़ा आ गया. बट मैटर इज डिफिकल्ट, डेफिनेटली डिफिकल्ट बनाया गया थोड़ा सा ताकि आप लोग नॉर्मल से कुछ अलग करो. यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, है ना. हमेशा वही वही बात है कि आपको पता है कि लाइक एग्जाम में किसी लेवल की जैसा ही मैटर आएगा, लेकिन ऐसे मैटर से आपका लेवल बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है, ठीक है. फ्लाइट क्रैश डिजास्टर, ठीक है. चलिए ये मैटर को मैं सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर देता हूँ. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, जो सॉफ्टवेयर का लिंक है जहाँ पे आपको ये डिक्टेशन क्लास के बाद में मिल जाएगा. वहाँ पे आप जाकर स्पीड को एडजस्ट करिए और डिक्टेशन को रिपीट कीजिए, ठीक है. डिफिकल्ट लगा, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. डिफिकल्ट थोड़ा सा तो लगेगा ये मैटर. बाकी होप यू एन्जॉयड एज वेल, ठीक है. ऐसा थोड़ा मजे लिया करो यार, टेंशन मत लिया करो, ठीक है. कि अरे बाप रे नहीं हो पाया, नहीं. जस्ट थिंक दैट यू आर डूइंग समथिंग विच नॉट एवरीवन इज डूइंग राइट नाउ. ओके, सो गाइस सिंस यू हैव द स्पीड एडजस्टर, तो हमने एक ही स्पीड पे आज ये डिक्टेशन लिया है. मेक श्योर कि आप ज़रूर डिक्टेशन को रिपीट करो, या फिर नहीं अगर आपको सॉफ्टवेयर पे करना है तो एटलीस्ट आप डिक्टेशन को दोबारा रिपीट किया करो. सिंस ये यूट्यूब का वीडियो है, यू कैन टेक इट अगेन एंड अगेन. आई विल शेयर दी PDF of this matter on the Telegram group as well. Join the Telegram group, and if you want to practice daily on matters of these kinds of level, ठीक है, लाइव डिक्टेशन होती है रोज. सो मेक श्योर दैट यू जॉइन द स्पीड बैच. सामने दिए हुए नंबर पे यू कैन व्हाट्सएप एंड you can join the speed batch to get your selection in any of the exam whichever you are targeting, SSC, your defense level, your Supreme Court, High Court, everything. ओके, चलिए इसके बाद हम मिलते हैं लीगल वाले क्लास में. सॉफ्टवेयर में स्पीड ज़्यादा लगती है, उसका रीज़न आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है, क्लास में. आज आप लोग अगर आपको लग रहा है कि आपको 90 की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप उसको 80 की स्पीड पे लिखा करो, ठीक है. अपनी थोड़ी स्पीड कम कर लो. अगर आपको ये लग रहा है कि 90 की स्पीड आपकी है और 90 की स्पीड पे आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको स्पीड को 85 या 80 WPM कर लो, फिर लिख के देखो, ठीक है. हाँ, आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम. इट इज़ समथिंग न्यू फॉर यू ना, तो आप लोगों को आदत नहीं है उस चीज़ की. चलिए, ऑल राइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. विल यू मीट अगेन इन द लीगल मैटर. तब तक मैं मैटर अपलोड कर देता हूँ.